So let's start with the third subject, which is Kothamangalam Subbu. Let's just refer to him as Subbu or number two. So जो हमारे ऑफिस बॉय है उनको लगता था कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज में, all of these problems are because of Subbu, and because he is the number two and he does not deserve to be number two. It's very funny क्योंकि ऑथर ने हमको एक पूरा अकाउंट दिया है उनकी अचीवमेंट्स का, और वो कितनी एनिग्मेटिक पर्सनालिटी थे शुरू से, and therefore and it's very difficult when you hear something about a person like he was a very charitable man कि वो किसी को किसी की प्रॉब्लम का एक रीजन हो सकते हैं. So let's move on and explore this funny account of who Subbu was. So Subbu was actually a Brahmin, and but the narrator said it because it's a virtue, because Subbu के और भी बहुत सारे virtues थे, उनमें बहुत अच्छी और बातें भी थी. तो लोगों को लगता है कि सुब्बू का करियर जो है, ही टॉक्स अबाउट हिज करियर, कि उनका करियर बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा क्योंकि वो ब्राह्मण है और वो बहुत क्रिएटिव भी हैं, बट दैट्स नॉट द केस. सुब्बू का करियर इनफैक्ट काफ़ी डिफिकल्टी में स्टार्ट हुआ होगा, बिकॉज व्हेन ही बिगेन हिज करियर तो कोई एस्टैब्लिश फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर, एंड लोगों के पास और कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं था जहाँ पे आप जाके काम करना शुरू कर सको. सो यू हैड टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, and he did not even have proper education कि आप उनको education का benefit भी दे दो. But more than that he had a lot of ideas. So सुब्बू के बारे में author ने जब explain किया है, when you read the chapter you will see how he was tailor made for films and films only. कि वो उनसे आप कितने भी आइडियाज दे सकते हैं. So if number one had any problem and number one wanted a suggestion, so Subbu would come up with 4 different ideas कि आप एक सीन को कैसे शूट किया जा सकता है, और अगर वो 4 आइडियाज भी काम नहीं करेंगे तो फिर he'll come up with a dozen other ideas. तो वो और वो काफ़ी instantly ideas लेके आते थे, and therefore in film industry having someone like Subbu was like really having an asset. उनके अराउंड काम करना भी बहुत फन था क्योंकि उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते थे, and he was always very cheerful, और he was so cheerful even after अगर कोई flop film चली गई तो he was happy about whatever he did. And he was also someone who was very loyal, right? तो narrator उनकी एक क्वालिटी पे एम्फेसिस करता है जो कि शायद एक रीज़न हो सकती है कि वो नंबर 1 के इतना क्लोज क्यों थे. सो सुब्बू के जो प्रिंसिपल हैं वो वासन है, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, और he was so उनकी ट्रेट में था उनकी लॉयल्टी, and therefore that's one of the reasons why he was very close to the principal. Let's come back to how Subbu was really a poet, right? तो पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर नाम भी Poets and Pancakes है, so you come across various different poets, right? So be it the office boy who was a poet, be it Subbu who is a poet, story department के अंदर तो it was a department of poets. ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सुब्बू भी काम करते थे, दो वो सारा काम करते थे नंबर 1 के साथ, लेकिन अटेंडेंस रोल्स के अंदर वो स्टोरी डिपार्टमेंट में थे जहाँ पे बहुत it was a department of all the poets. So poets kind of is a substitute for all the creative people or the creative team of Gemini Studios. Then you have another subject altogether titled as poets कि बहुत different artists जो अलग अलग जगह थे वो भी आते थे. So if poets is written here, it's also सुब्बू के लिए वो बोलने के लिए है कि वो एक बहुत अच्छे artist हैं, and he was very diverse, and he deliberately chose to address his poetry to the masses, and he composed several truly original story poems in folk refrain and diction. So स्टोरी पोएम्स करके उन्होंने लिखना शुरू किया था फोक डिक्शन के अंदर, फोकलोर जैसे लिखा जाता है वैसे. उन्होंने एक नोवेल पे लिखा जिसका नाम है थिल्लन मोहन बाल. ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, तो आप उनमें रेफर कर सकते हैं, प्लीज़ एक बार खोल के पढ़ लीजिए. एंड ही ऑल्सो रिक्रिएटेड देवदासी क्वाइट सक्सेसफुली. उसका जितना एसेंस था और जो ब्यूटी थी उसकी सुब्बू ने वो भी रिक्रिएट करी है. And apart from everything else, apart from his career, apart from him being very good at his work, Subbu was also a very charitable and a very improvident man. So I'll read out an extract from the story जो कि उनके बारे में लिखा हुआ है. But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. He had a genuine love for anyone who came across,
and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. So Subbu was a really lovable person, or he had like immense love for everyone whosoever would come to him, and it seemed again Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them, such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. So वो क्या बोलते हैं, he was a very charitable man, and such people should not have enemies, but they do. And that's when we move on to what narrator gives a reason. Is that because he was a part of the story department?